Hello everyone. In my last video, I have discussed about the basics of liquid drop model in which we studied that the shape of nucleus and liquid drop are both analogous to each other. And after that, we read about the assumptions of liquid drop model where we study that the nuclei is incompressible, nuclei is spherical in shape, its density is constant, binding energy per nucleon is also constant, and the last we studied that the binding energy per nucleon is proportional to mass number. Today we will do about binding energy from five terms, that how we identify the binding energy which are directly proportional to mass number. So our first term is volume energy term. In this, firstly, we have to note that the volume energy term, it is mostly contribute in this, and here binding energy for volume. In subscript, I have written V for volume. It is directly proportional to mass number. ओके अगर हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू आएगा और जो कांस्टेंट आएगा दैट इज ए वी ओके तो हेयर वी हैव द वॉल्यूम एनर्जी टर्म ओके आर नेक्स्ट इज surface energy term. In surface energy term, binding energy is directly proportional to A की पावर 2/3. अगर हम proportional हटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए एस ए रेज टू पावर 2/3. You have to remember that the binding energy is directly proportional to A की पावर what? बिकॉज अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो हमारे पास सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट द इन सेमी एम्पिरिकल मासफुला सरफेस एनर्जी टर्म डिपेंड्स अपॉन मास नंबर एज. तो आर आंसर विल बी ए रेज टू पावर 2/3. ओके थर्ड वी हैव कूलम एनर्जी टर्म. हियर BC is directly proportional to A की पावर minus 1/3. Okay, and A की पावर minus 1/3. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो को हटाओगे देन माइनस AC Z minus 1 A raised to power minus 1/3, and this Coulomb energy is used to disrupt the nucleus. Next we have asymmetry energy, and asymmetry energy is due to unequal number of protons, and we can say it is due to different number of protons and neutrons. So its energy is represented as BA, which is directly proportional to A minus 2z का square over A. And if we remove proportional, then we get minus A minus 2z का whole square over A. Okay. After that, our last binding energy form is pairing energy. Okay, here P is directly proportional to A raised to power minus 3/4. BP is equals to 0 plus minus A sigma over A raised to power 3/4. It is also known as odd even effect, which we are discussing in detail. These are our five forms of binding energy. First one, volume energy. Second, surface energy. Third, Coulomb energy. Fourth, asymmetry energy. And the last one is pairing energy. And you can take a screenshot of it
or write it on your notebook in tabular form, okay, so that you will remember it in a very free way, that where the binding energy is proportional to mass number at which number. Next we have odd even effect. Here first one we have mass number, second number of protons, third number of neutrons, and last is our pairing energy. If our mass number is even, then number of protons are also even. Just take an example of oxygen. Oxygen have even mass number, so its protons are also even 8, and number of neutron is also even. 16 minus 8 is equals to 8, which is an even number. Then its binding energy is A sigma over A ki power 3 by 4. Next case we have, if mass number is odd, number of protons is even, and number of neutrons are also odd, then its pairing energy will be 0. Third we have mass number odd and its number of protons are odd and number of neutrons are even, then again its pairing energy will be 0. In last case, even mass number, odd we have protons and odd ही हमारे पास neutrons, then its binding energy is minus a की पावर a सबस्क्रिप्ट में डेल्टा. अगर हम इस सभी को ऐड करोगे then we get our binding energy Bp is equals to 0 plus minus A sigma over A raised to power 3 by 4. Okay. Here is our odd even effect. आपने सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि अगर हमारे पास मास नंबर इवन है या ऑड है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी उसी अकॉर्डिंग गिवन होंगे. तो आपने यहाँ बाइंडिंग एनर्जी लाइक पेयरिंग एनर्जी रिमेंबर रखनी है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी. जैसे कि इफ प्रोटॉन्स आर ऑड, न्यूट्रॉन्स आर इवन एंड मास नंबर इज ऑड, देन आर पेयरिंग एनर्जी इज 0. ये आप लोगों ने याद रखना है. Okay, noted everyone. Next is failures of liquid drop model. Here are failures of liquid drop model. So our first is that it is failed to explain nuclear spin and magnetic movement. इसने हमें nuclear spin के बारे में या उसके movement के बारे में कुछ भी नहीं बताया था. Next that it failed to explain magic number. इसने magic number के बारे में हमें नहीं बताया था, which we have discussed in our previous videos. What are magic number? And I can define it again, that the sum nuclei having a certain definite number of either protons or neutrons are more stable than their neighbors. That number are called magic number, and the magic numbers are 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126. Okay. नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रुपल मूवमेंट. वैसे तो हमने इसको पहले कर लिया था, बट इसका एक फॉर्मूला है. जैसे हमने किया था दैट व्हेन क्यू इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हमारे पास शेप है स्फेरिकल. व्हेन क्यू इज़ ग्रेटर देन 0, देन आवर शेप ऑफ न्यूक्लियस इज़ प्रोलेट. व्हेन क्यू इज़ लेस देन 0, देन इट्स शेप इज़ ऑब्लेट. बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास मास नंबर गिवन होता है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपल मूवमेंट. तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू -3/4 2J - 1 R² over 2J plus
1. J हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है एंड द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3. हमारे पास मास नंबर गिवन होगा, R नॉट एक कांस्टेंट है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम J की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन हैं. ओके, तो उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी कोई नंबर होगा दैट इज़ आर J, वैल्यू ऑफ J, एंड द वैल्यू ऑफ R नॉट लाइज बिटवीन 1.2 to 1.5 Fermi meter. Okay, this formula is for numerical purpose. Thank you everyone.